Hello students. In this class of Slate Physics, we will continue with the topic of refraction. जैसा कि आपने देखा कि इसके पार्ट 1 वाली वीडियो में we have defined all the terminologies related to refraction including angle of incidence, angle of refraction and refractive index. So just for your revision, मैंने यहाँ पर एक एक्चुअल फुटेज ऐड किया है जिसमें आप एक लेजर लाइट देख सकते हैं which is passing through a glass, right? So this laser light is coming from air and it is going into glass. Right? If you want to draw a normal line here, normal is a line which makes an angle of 90 degree with the refracting surface. So glass की surface के ऊपर आपने ये एक line draw की है. This is normal. So this ray is approaching the glass. This is incident ray and this is angle of incidence. This is refracted ray and this is angle of refraction. So you can say that when the ray is entering from incident from rare medium to dense medium, angle of incidence is greater than angle of refraction. Next point पर the same ray is going from glass to the air. This is normal. Now this is angle of incidence. जो पहले angle of refraction था अब वही angle of incidence है. Right? And this is angle of refraction. At this point, angle of refraction is greater than angle of incidence. So, हम ये काम कर चुके हैं previous video में that when the ray is entering from rare to dense medium, the formula of refractive index n is equal to sine I over sine r, where I is angle of incidence and r is angle of refraction. Now, we already know that when rays entering from dense back to the rare medium, the formula of refractive index is sine of angle of refraction divided by sine of angle of incidence. और एक और फॉर्मूला था भी जिससे आपने इसको डिफाइन किया था दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. और हमने जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे उसमें ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाज अप्रॉक्सीमेटली 1.5. So basically you have to see that video to continue within this video. So looking at this fourth point, define the terms. Now this is new. This is continuation of refraction and this is new. You have to define the term critical angle and total internal reflection this time, not refraction. Now, अब refraction के टॉपिक में reflection आ रहा है, ठीक है? So हम देखेंगे कि किस सिचुएशन में, किस कंडीशंस में total internal reflection होती है. Recall and use the equation refractive index is equal to 1 over sine C, where C is critical angle. Right? Now we have to see what is critical angle and what is total internal reflection. Define experiment to show the internal reflection. And the last point is describe the use of optic fiber. तो optical fiber को भी हम इसी क्लास में बड़ी डिटेल में देखेंगे शाबाश. Right? So the phenomena of total internal reflection takes place when the ray enter from dense medium to rare medium. Total internal reflection. This is a phenomena when the ray enters from dense medium to rare medium. This phenomena will never occur when the ray is entering from rare to dense. इसकी एक कंडीशन तो ये है कि dense medium से rare medium में जानी चाहिए. And the second condition is the angle of incidence must be greater than angle of refraction. Angle of incidence must be greater than angle of refraction. So, आपके सामने मैं एक ग्लास ब्लॉक ऐड करता हूं. This glass block will help us to understand the phenomena of total internal reflection. Now, this medium is glass. So you already know कि glass जो medium है, this is dense medium and outer medium is air
and air is rare medium. What was the refractive index of glass? अगर आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं. Refractive index of glass is approximately 1.5. So ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस क्वेश्चन में हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस वैल्यू इज 1.5. So we will see few cases कि what happens to the light rays when they are moving from glass to the air, right? They are moving from dense medium to rare medium. हम 3 स्टेप्स में इसको अंडरस्टैंड करेंगे. सो केस 1 में आप लोग देखें कि अगर मैं ग्लास की सरफेस के ऊपर एक रे ड्रॉ करता हूं, एक लाइन ड्रॉ करता हूं, एंड दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस ऑफ ग्लास. व्हाट डू यू कॉल दिस लाइन? दिस लाइन इज कॉल्ड एज नॉर्मल. याद रखिएगा, बोथ एंगल ऑफ इंसिडेंस and angle of refraction are measured with respect to this line, this normal line. And I am introducing a ray of light which is at an angle of incidence of, let's say this has an angle of incidence of 25 degrees. So this is hitting this point of incidence. This incident ray is hitting at an angle of incidence of 25 degrees. What will be the value of angle of refraction? Let's find out using the formula. What was the formula for the light ray entering from dense to rare? The formula of refractive index was sin r over sin I, because इस case में angle of refraction is greater. Let's substitute the values. Refractive index is 1.5. Angle of refraction, we have to find the value of angle of refraction, whereas the angle of incidence is 25 degrees. अच्छा, हमें इतनी बात तो पता है कि refracted ray जो है उसने away from normal bend करना है, because this is a case of ray moving from dense to rare medium. So उस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए we are taking help of calculator. 1.5 multiplied by sin 25 and sin inverse of this value, and this is coming out to be 39.3. Angle of refraction is equal to 39.3 degrees. So I am drawing a refracted ray here, and you can see the angle on my ruler is appearing as 39 degrees. So in this case, angle of refraction is equal to 39.3 degrees. ठीक है? We can clearly see that angle of refraction is greater than angle of incidence. So this was case 1. Now what will happen if you will start increasing the angle of incidence? बच्चों, जैसे जैसे angle of incidence increase करता जाएगा, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेट्स सपोज 30 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 39 से भी ग्रेटर हो जाएगा, वो 40s में चला जाएगा. ठीक है? अप टू अ पॉइंट दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मैक्सिमम. ठीक है? तो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैक्सिमम होगा तो रिफ्रैक्टेड रे इस नॉर्मल लाइन से मैक्सिमम एंगल पे जा रही होगी. इट विल बी गोइंग अलोंग द सरफेस ऑफ दिस ग्लास, बाउंड्री के साथ साथ जा रही होगी. सो इमेजिन करें व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट दैट टाइम. एट दैट टाइम द मैक्सिमम पॉसिबल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 degrees. राइट? सो लेट्स ड्रॉ दिस केस. अब हमें पता है कि केस 2 के अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया है 90 डिग्रीज. तो किस एंगल ऑफ इंसिडेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग ये मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है? लेट्स फाइंड आउट. Once again, applying the formula of refractive index. Refractive index is equal to sin r over sin I. ठीक है? Substituting the value of refractive index, 1.5 is equal to sine of angle of refraction, which is 90 degrees in this case, divided by
angle of incidence which we have to find. ठीक है? So angle of incidence in this case is coming out to be 41.8 degrees. 41.8 degrees which is approximately equal to 42 degrees. तो बच्चों इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल, वी हैव टू ड्रॉ दिस केस. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. इट इज अ लाइन वंस अगेन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 degrees. सो मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग है? वो है 41.8 which is approximately equal to 42 degrees. So here I am drawing angle of incidence which is 42 degrees. So this is your incident ray, right, which is hitting the point of incidence at an angle of incidence of 42 degrees, and corresponding to this your refracted ray is going along this glass boundary. ठीक है, along this line, and in this case the angle of refraction is maximum and that is equal to 90 degrees. इससे ज्यादा further refraction possible नहीं है. Now understand this thing कि case 2 में the angle of incidence is maximum, for which angle of refraction in rare medium in air is maximum which is 90 degrees. So इस situation में इस maximum angle of incidence को you call critical angle. This angle is referred as critical angle. So what is critical angle? Critical angle is angle of incidence in dense medium, जो कि इस केस में glass है, for which the angle of refraction is maximum and that value is equal to 90 degree. Once again there is a constant reminder कि सिर्फ तब possible होगा जब rays moving from dense medium to rare medium, right? So we are writing critical angle. हम दोबारा से इस डायग्राम पे वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले आप क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन फाइंड आउट. डेफिनेशन लिखेंगे critical angle. So critical angle is angle of incidence in dense medium, angle of incidence in dense medium for which the angle of refraction in rare medium is 90 degrees. और याद रखिए this is the maximum possible value of refraction, angle of refraction. So moving on to the fourth formula of refractive index. आप लोगों को पता है जनरल फॉर्मूला फॉर डेंस टू रेयर मीडियम इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आई. ठीक है, बट व्हाट इफ व्हेन क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस? व्हेन क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? बच्चों दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, अभी हमने देखा. ठीक है, तो इसकी वैल्यू को कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें. n इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया 90 डिग्रीज. सो साइन 90 डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ इंसिडेंस किस एंगल के इक्वल है? दिस इज इक्वल टू एंगल क्रिटिकल एंगल. ठीक है, सॉर्ट आउट द वैल्यू ऑफ साइन 90 फ्रॉम योर कैलकुलेटर्स. साइन 90 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ c. So here you have the fourth formula of critical angle, refractive index, which is refractive index is equal to 1 divided by sine of c, where c is the value of critical angle. So at this point of time we are done with all four formulas of critical angle, refractive index. So coming back to this diagram, case 2 में आपने देखा that your ray is being refracted at an angle of 90 degrees.
बट व्हाट विल हैपन कि अगर आप क्रिटिकल एंगल को फर्दर इंक्रीज करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को फर्दर इंक्रीज करेंगे, सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्रैक्शन पॉसिबल है, दैट एंगल इज 90 डिग्रीज. ठीक है, लेकिन अब हम इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करके देखते हैं. फॉर दैट यू विल राइट केस नंबर 3. ठीक है, so what was situation in case 1? Now you know that angle of incidence was less than critical angle. Case 2 में angle of incidence was equal to critical angle, and now angle of incidence is greater than critical angle. ठीक है, मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. once again this line is referred as normal. ठीक है, अच्छा कोई भी एंगल सिलेक्ट कर लें, लेकिन ये ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, विच इज 41.8 डिग्रीज. इस एंगल से ग्रेटर एंगल सिलेक्ट करें. लेट्स अज्यूम दैट नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 50 डिग्रीज. ठीक है, मैं रूलर से यहां पर इंसिडेंट रे ड्रॉ कर रहा हूं. सो दिस इज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट. एज यू कैन सी ऑन द रूलर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 50 degrees. This is angle of incidence and its value is equal to 50 degrees. Keep in mind that this time angle of incidence is greater than critical angle. Now what will happen to this ray? अब refraction तो possible नहीं है. Why? Because maximum possible refraction तब थी जब आपके पास angle of incidence was equal to critical angle और उसके लिए refracted angle जो था वो 90 degrees था. So what will happen? बच्चों इस केस में जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा, लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी, रादर ऑल द लाइट विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि लाइट की रिफ्लेक्शन हो जाएगी, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. राइट, सो लाइट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक एट एन एंगल ऑफ 50 degrees. Now, my question from you is, what is this angle R this time? Is it angle of refraction or angle of reflection this time? But because this phenomena is total internal reflection, so this angle is also angle of reflection. ठीक है, this is angle of reflection. So this is also equal to 50 degrees because अगर reflection की बात आ गई तो उसके ऊपर laws of reflection applicable होंगे. So this is total internal reflection. Angle of incidence must be equal to angle of reflection this time. Angle of incidence is equal to angle of reflection which is equal to 50 degrees. अब अगर आप एंगल को फर्दर इंक्रीज करेंगे तो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर ही रहेगा. दैट्स व्हाई व्हाट विल हैपन, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी. ठीक है, सो व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? यू आर राइटिंग कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. For total internal reflection, first condition is light rays must move from dense to rare medium. ठीक है, जैसा कि इस एग्जांपल में देखा, the rays are moving from glass which is denser medium to air which is rare medium. So light rays must move from dense to rare medium. And what is the second condition? Yes, the second condition is angle of incidence must be greater than the critical angle. Must be greater than critical angle. ठीक है बच्चों, इस सारी सिचुएशन को एक क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं. फॉर दैट वी आर राइटिंग अ क्वेश्चन. ठीक है, मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ करता हूं आपके सामने.
Here is a prism. ठीक है, प्रिज्म की, ग्लास प्रिज्म की तीन साइड होती हैं. दिस इज वन साइड and these are the other two sides of this glass prism. This is one side and this is the other side. So this is a glass prism, ठीक है, and this glass prism has value of refractive index n is equal to 1.55, right? First part of this question is what is the value of critical angle for this glass? So here we will use the fourth formula of refractive index, which is n is equal to 1 over sine of critical angle. ठीक है, for this glass the value of refractive index is 1.55. 1.55 is equal to 1 divided by sine of critical angle. So critical angle is equal to sine inverse of 1 divided by 1.55. So sine inverse of 1 divided by 1.55 is coming out to be 40.2 degrees. 40.2 degrees. ठीक है, now have a look at this prism. इस prism के angles को देखें. What is this angle? This angle is, as you can see on the ruler, this angle is 45 degrees. This angle is 90 degrees. What will be the other angle? This angle is also 45 degrees. Now, a ray is incident on this glass prism in this way that it is coming along the normal from this initial point. Let's call this initial point A. Acha, what will happen to the direction of this incident ray? This will go undeviated. मैंने last lecture में आपको बताया था कि if the ray is coming along the normal, अगर परपेंडिकुलर आ रही है विद द सरफेस, इट विल गो अनडेविएटेड. इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगी. सो इट इज गोइंग स्ट्रेट लाइक दिस. नाउ इट हैज रीच्ड दिस पॉइंट x. नाउ वी हैव टू डिसाइड व्हाट विल हैपन एट दिस पॉइंट x. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? दिस एंगल इज 45 डिग्रीज. इस पॉइंट पे हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा. लेट्स ड्रॉ दिस नॉर्मल. Right? What is the value of this angle of incidence? This angle of incidence is 90 minus 45. The value of angle of incidence is equal to 45 degrees. So at this point x, you have to decide whether this angle is equal to critical angle, less than critical angle, or greater than critical angle. So this angle, this 45 degrees angle is greater than critical angle, and here दूसरी condition of total internal reflection भी meet हो रही है. And what was that condition? That the ray of light is moving from dense to rare medium. So as this angle of incidence is greater than critical angle, which was 40.2, ठीक है, तो अब इस पॉइंट पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी. सो द रे वुड बी बाउंस बैक इनसाइड द ग्लास. बच्चों, ये वाला एक्सपेरिमेंट आप लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर्स, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग एट पॉइंट एक्स? पॉइंट एक्स पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है. रादर देन रिफ्रैक्शन, देयर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट? सो this is angle of reflection which is equal to 45 degrees, right? Now the ray is going from this point, and once again इस point y के ऊपर क्या हो रहा है? The ray is coming from dense medium, but this time this is along the normal. It is making an angle of 90 degrees with the reflecting surface, so it will go undeviated. तो अगर आप प्रिज्म के ऊपर इस तरह से लेजर शाइन करें such that the angle of incidence is greater than critical angle, you will easily observe total internal reflection. This phenomena is used in optic fibers, right? Optic fiber में हम ये phenomena को use करते हैं for the communication purpose, so that we can communicate over the speed of light, which is 3 into 10 raised power 8.
ठीक है. दिस इज अ रेवोल्यूशनरी चेंज. इसके ऊपर आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो स्पीड ऑफ लाइट पे कर रहे हैं. नथिंग इज फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट. सो इन द नेक्स्ट क्लास we will continue from here and we will see the application of total internal reflection within the optical fiber, and we will do some very critical questions related to refraction. So for that class, stay tuned. Thank you.